वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है उसको बनाने का मकसद ये है कि अपने स्टोव की सफाई, और वो आपको दिखा दें कि हम अपने स्टोव को साफ़ कैसे करते हैं। तो स्टोव बहुत गंदा था और हमने इसकी सफाई कर दी है। पिछले 1 घंटे से सफाई कर रहे थे। स्टोव साफ़ करने के बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि क्यों ना अपने टूल्स के लिए एक और एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए जगह बनाई जाए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जगह की थोड़ी शॉर्टेज है। इसीलिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना एक और अलग से स्टोरेज बनाया जाए, ताकि हम अपने सामान या अपने टूल्स जो हैं उनको वहाँ पे रख के अपने लिए टेबल को साफ़ करें, ताकि हम यहाँ पे अपने काम सही से कर सकें। तो मैं आपको दिखाता चलूँ कि हमने यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये पहले नहीं था। ये जो यहाँ पे सामान है इनको हम पहले यहाँ पे रखते थे। ये यहाँ पे जो ये पड़ा हुआ है इसके साथ में यहाँ पे ऐसे रख देते थे। तो जगह बहुत कम थी और काम करते वक्त थोड़ा मसला कर रहा था। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना यहाँ पे एक और स्टोरेज के लिए जगह बनाई जाए। तो मैंने यहाँ पे एक और स्टोरेज के लिए जगह बना दी है और मैंने यहाँ पे अपने सारे सामान यहाँ पे रख दिए हैं। और जो काम करने के लिए अभी टेबल पूरा फ्री हो गया है और मैं अब यहाँ पे अपने काम सही से कर सकूँगा। एक और ज़रूरी बात, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। हाँ, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब लाजमी करें। ओके।